Formally, we are now starting the session. My name is Padma Kisi, and I'm the Associate Director of Academics at ICA. We also have with us our recording in progress, Mr. Biswajit Mukherjee, sir, and our IT expert, Mr. Anand Kar. First of all, I'd like to welcome you all in today's session. The title is Unleashing New Age Learning, the Blended Way. And to present this session, we have with us the speaker of the day, Professor Ujjwal Chowdhury. So giving a brief introduction, since we are already late by 10 to 15 minutes, I'd like to give a brief introduction about Ujjwal, sir. I'll show you the screen. Professor Ujjwal Chowdhury is a maverick who travels between communication academics and its practice, between profession and social engagement, between traveling and staying put. Currently, the strategic advisor and a professor with the Daffodil International University of Dhaka, grant consultant with Kolkata-based Adamas University, and the Secretary of Global Media Education Council. He was till 2021 the Pro-Vice Chancellor of Adamas University and had been earlier the Dean of Symbiosis and Amity Universities, apart from Peared Academy and Whistling Woods International. He had been a wanderer, working as a media consultant consulting with Amsterdam Film School in Netherlands, working on films for WHO in several nations, and working with Accor Media in Dubai. He speaks and writes on various platforms and works in civil society initiatives on media, entrepreneurship, and democracy. He runs a school for the children of the marginalized communities of the Sundarban area of Bengal in memory of his late mother, Smriti Anu Chowdhury. So this was all about him. If you would like to know more about sir, kindly contact us. We will share with you his profile. So now I hand over to Professor Ujjwal Chowdhury, sir, to detail his presentation on the topic Unleashing New Age Learning, the Blended Way. Now over to you, Ujjwal, sir. Thank you, madam. Most probably you are at 11:15 or 20, right? What is the time there? 11:20, sir. 11:20. I am at 5:32, morning 5:32, because I am in Western Africa, in Guinea, in Conakry. The name of the city, the capital city is Conakry. I am here for consultation with government and private education group together on how to create blended learning, online learning for school systems. We had a meeting yesterday with Kofi Annan University Vice Chancellor and 3 important principals. Monday I'm meeting the education minister also. It's a great experience. Why is this happening? I have a reason why am I telling it. Why are different countries as distant, as remote as even Guinea here, planning to get into blended learning, planning to get into online learning? COVID has taught that there can be situations where you cannot physically meet, but the learning must not stop. Then life has taught out of the 8 billion people in the world, almost 8 billion people in the world, at least 2 to 3 billion people are in such situation that they cannot spend time or money going to a campus for all day, 5 hours, 6 hours, and then study. So, but is it that such people who cannot go to a campus to study, or can go only few times, 1 or 2 times in a week, or those who do not have enough resources to do that study, or because of health reason, COVID type situation, people cannot meet. So under such situation, will education not run? It must. It must, because without education, skill development will not happen. And without education, newer, next movement in life will not happen. If that is so, the education has to keep moving. So online education, distance education was born out of problem. That was the past. Today, what I'm going to tell you is that distance or online education, and in my opinion, blended education, sometimes you come to classroom once a week or whatever, and rest time you don't. Now, this education
is actually the need of the hour. The need of the hour, even those who are studying full-time in Kathmandu University, they also have to do a part of education online. This is the continuous learning process will only evolve through distance and online integration. So earlier, people used to think online matlab koi padhai vadhai nahi hai. Abhi now people understand online matlab or involved learning hai. For example, now there are 18 people in this discussion. If 5 people are not listening, let's say, that is their problem. Online learning is an involved learning. That means I will listen to a education or learn an education online because I want it. Otherwise, in physical school, it is the process that makes you listen to things. The strict process, discipline and all that. So that is an imposed learning, and online is a voluntary learning, self-learning. And self-learning is much more impacting. देखेंगे कोई चीज को बहुत ध्यान से देख रहे हैं या सुन रहे हैं या बोल रहे हैं या मतलब बातचीत कर रहे हैं तो वो आपको ज्यादा याद रहेगा. You'll remember things in which you are involved so much deeply. Traditional education often that involvement is limited. That but does not mean, I am not saying that there should not be physical face-to-face learning. There should be. But the scope of physical learning is limited. In the online learning, you are listening to something on, like just now, let's say on your television, on your computer screen, and you can also search something what I am telling or discussing on the Google on your mobile. You can immediately refer to some other notes that you may have. So this multiple source concept comes in. And in online, now we learn some concept in a classroom or from a book, but we can search online more to get far more details. And many a time, some of the terms that we use class mein, if you do not understand then, you can search online to get more. So a full new world is opening up. अगर आप मुझे पूछे तो मैं ब्लेंडेड लर्निंग के फेवर में हूं. फिजिकल भी थोड़ा बहुत जरूरी है. जैसा कि अगर ये 18 जन हम लोग एक साथ मिलते हैं, if we were together 18 of us, the probability of building more human relation will be there. So I will be happy to know Samar ji or Dokha ji or Ayush ji and talk one another, and you'll be also talking closely. Now that's one benefit. But that does not mean that we will wait till when we can meet. So we can still meet. I am just now more than 5,000 or 6,000 kilometers away from you. I am in another continent, Africa, and I am just now 5 or 6 hours behind your time. Still we are meeting. And that's possible because technology is allowing us to meet. So with this introduction, I will now come to the presentation as well. And we will continue with the presentation and keep discussing the thing. Yes, I'm showing it. I think you can see my presentation, right? So mentoring learning ahead in a blended world. Now unleash your new normal learning. Traditional learning was all about face-to-face learning, book-based learning, rote-based, remembering, rote-based learning, memory-based, and written exam-based evaluation. That was the traditional learning. But post-pandemic, learning has started changing in a major way. Now, the concept of teacher and student itself is changing. We are moving to a new concept. The teachers are becoming mentors. Earlier, teacher was the sage on the stage. Last word on the syllabus evaluation. Introduces the topic in the class. We don't study in advance from home. It is introduced in the class and he interprets it. Classroom teaching and assessing answer script is the major task of the teacher. And the teacher is to always do chalk and talk approach and focus on a given syllabus, structured syllabus. This is changing. And by 2025, it will completely change. Pandemic has given a push. The new situation of teacher is no more teacher but mentor. You cannot teach.
At least in higher education, you cannot teach. In school education, still somewhat possible. So in higher education, you are a friend, guide, and motivator. You create your own learning resource. पहले टीचर अपना वीडियो नहीं बनाता था, अपना जूम टॉक करके रिकॉर्ड करके या ऐसा भी कैमरा में वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, पावर पॉइंट बनाना, ये सब नहीं था. बट नाउ यू हैव टू क्रिएट योर ओन प्रोप्राइटरी लर्निंग रिसोर्स. प्रोप्राइटरी माने ओनरशिप. एग्रीगेट्स लर्निंग रिसोर्सेज एंड शेयर्स, जो चारों तरफ में मिलता है नॉलेज ऑनलाइन में, इंटरनेट में, उससे भी निकाल के एग्रीगेट करके लर्नर को देना. मेंटरशिप इनसाइड एंड बियॉन्ड द क्लासरूम. So teacher is only inside the classroom. Mentor is both sides. Adept in multiple evaluation. क्यों written exam होगा केवल? Project based exam होगा, research paper based exam होगा, practical exam होगा, viva interview based exam होगा, field report के ऊपर exam होगा, और written भी होगा. So multiple evaluation system. That is the new age learning that is coming up. Begins with a structured syllabus. आपका सिलेबस हर सब्जेक्ट में दिया जाता है. स्टार्ट विद स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बट मूव ऑन टू ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब जो आपको पसंद उसमें डीपली सीखो. नाउ एमबीए हैज 20 पेपर्स, बट यू माइट एंजॉय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन, दैट पेपर. सो यू गो डीप इनटू दैट. You might enjoy how banks make money, banking functions. So you go deep in that. So that is, you go beyond the syllabus. That is organic learning. So EdTech Comtech savvy. अभी टीचर को education technology, communication technology, how to use computer, how to use internet, how to use Zoom, Google Meet and all that, how to use camera to make your own video and say to your learner, how to record your voice, how to make a good PowerPoint. All these are required today compulsorily for the teacher to go to the next level. High on emotional intelligence and human touch. पहले क्या सिलेबस खत्म करना था बस, अब उससे आगे बढ़ना है. आगे I have to make people understand, internalize. So teacher का कॉन्सेप्ट अब मेंटर की तरफ जा रहा है. न्यू एज लर्निंग जो हम बात कर रहे हैं, उसको अगर अनलिश करना मतलब उसको आगे बढ़ाना. अनलिशिंग न्यू एज लर्निंग रिक्वायर्स नो मोर टीचर्स बट मेंटर्स. अगर आप में से कोई टीचर है तो जरूर इसको ध्यान रखिए कि आगे आपको मेंटर ही होना होगा. उसी तरह ट्रेडिशनल स्टूडेंट कॉन्सेप्ट से भी हमें निकल के आना है. ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स स्टडी इन द क्लासरूम एंड फ्रॉम द टीचर्स. द स्टूडेंट्स स्टडी फ्रॉम बुक्स, टीचर्स at times search in the internet. The students study for exams only, marks, grades, degrees, and they only study the given syllabus, structured syllabus. And they are always competing among themselves, study in competitive environment. ये पुराना मॉडल है. नया मॉडल पोस्ट पैंडेमिक जो हो रहा है, आप क्लासरूम में भी पढ़ेंगे, मेंटर से भी पढ़ेंगे, पीयर्स अपने साथ के दोस्तों से भी पढ़ेंगे. पीयर्स आप क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे, इंटरनेट से भी पढ़ेंगे, और प्रैक्टिकल करके एक्सपीरियंस से भी पढ़ेंगे. यू आर स्टडीइंग मार्क्स एंड ग्रेड इज इमीडिएट आउटकम, but you are studying for life and application. You are studying through self study. अगर सेल्फ स्टडी नहीं है तो स्टडी नहीं है. हमारा बचपन का पढ़ाई लोग, जो मेरा नहीं हुआ ऐसा कि मेरा प्राइवेट ट्यूटर हमने यूज नहीं किया था, पेरेंट्स ने यूज नहीं किया था, बट नॉर्मली आई सी today's children either study from teachers in the class or study from private tutor. That's a very dependent education. Where is self study? Where is self discovery? Internet ho ya kahin aur se bhi. Where is that? So this is a challenge of the traditional education. So today self study, learning to learn, कैसे खुद सीखना है, that itself is a quality. जो Google सर्च करना हो या कोई वीडियो से सीखना हो, कैसे खुद सीखना है. लर्निंग टू लर्न, स्ट्रक्चर्ड सिलेबस शुरू में, ऑर्गेनिक लर्निंग बाद में. स्ट्रक्चर्ड माने जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको सिलेबस देता है, दैट्स स्ट्रक्चर्ड सिलेबस. ऑर्गेनिक लर्निंग जो मुझे सीखना है, समथिंग दैट आई वांट टू लर्न एंड गो डीप इनटू इट, दैट्स ऑर्गेनिक लर्निंग. कई तरह के ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्स है, यूएस बेस्ड एब्सको, मैग्रो हिल एजुकेशन,
डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क डेलनेट, और ये सब में 2.5 लाख बुक्स, जर्नल्स, रिसोर्सेज हैं, वहां से सीख सकते हैं। बैंगलोर बेस्ड कॉपी किताब एक डिजिटल कलेक्शन है, 80 लाख का ई बुक्स उसमें है। तो दीज आर सोर्स, ऐसे बहुत सारे सोर्स है। जैसे आपके पास इग्नू बहुत सारे सोर्स ले आता है, ऑनलाइन रिसोर्स, किताब, फिल्म्स ले आते हैं। सो दीज रिसोर्सेज से सेल्फ लर्निंग संभव है। While you need someone to explain the basic points, but unless you have studied it one time, it will not be understood better. For example, ये जो प्रेजेंटेशन मैं कर रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन अगर आप पहले देख कर आते, पढ़ते, अगर आपको मिला हुआ होता, पहले देख के आते, कभी आगे ऐसा भी करेंगे, सो आज का डिस्कशन और इजी हो जाएगा। Your discussion will become even easier if you have already seen this and have come to the session. So that is the new age learning. पहले हम आते थे क्लास में, we don't know what is going to be discussed in the classroom. हम वहां आके ढूंढ मिलता था, अच्छा आज का टॉपिक ये है, सब्जेक्ट मालूम होता है, टॉपिक नहीं मालूम होता है। लेकिन अब जो नया सिस्टम है, यू आर सपोज टू रीड इन एडवांस अपने आप एक बार, अच्छे से समझो या नहीं समझो, then you come to the classroom for deeper discussion. Then the engagement is higher. The engagement will be better if you have studied one time earlier. So study in a collaborative environment. पहले education था competition, always competition. अभी लोग समझ गए एक दूसरे से competition करके किसी को भी फायदा नहीं है. Nobody gains. Rather, अगर मैंने एक टॉपिक कम समझा, पद्मा जी मुझे समझा दिया, और पद्मा जी ने कुछ कम समझा, मैंने समझा दिया, दोनों का बेनिफिट हुआ। तो कोलैबोरेशन इज द न्यू मंत्र of new normal learning. Competition was 20th century या 21st century के शुरुआती समय में. Now more and more collaboration. So ये मेरा सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट कि टीचर कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, टीचर मेंटर हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट लर्नर हो रहा है। अब टीचर के 4 काम है। फर्स्ट काम कंटेंट डेवलप करना। फर्स्ट काम है कि अपना लर्निंग रिसोर्स एंड टूल्स को बनाना, क्रिएटिंग लर्निंग रिसोर्स एंड टूल्स। पहले क्या होता था लर्निंग रिसोर्स? बुक। अब लर्निंग रिसोर्स क्या है? बुक के साथ वीडियो है, ऑडियो है, अपना भी कुछ वीडियो ऑडियो बना सकते हैं, पावर पॉइंट है, केस स्टडी है। सो लर्निंग रिसोर्स को एक साथ लाके लर्नर को देना, ये पहला काम है। दूसरा काम, ये चीज को लर्नर को देना ठीक से, चाहे ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, कैसे भी उसको देना। तीसरा काम, लर्नर को एंगेज करना। ये जो लर्निंग रिसोर्स है उस पर लर्नर को एंगेज करना। तो आपको मैं पूछूंगा, यहाँ जो 18 जन उपस्थित हैं, इनको मैं पूछूंगा टुवर्ड्स द एंड, what exactly are you gaining out of it? What have you understood? Because unless you are engaged, the learning is not complete. So every education finally will end with an evaluation. पहले का इवैल्यूएशन था लिखित एग्जाम लेना, अभी 16 टाइप के एग्जाम्स है, 16 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, वी विल टेल यू ग्रेजुअली। सो दीज आर द 4 टास्क्स ऑफ मेंटर्स। तो पहले कैसे लर्निंग रिसोर्स बनाना? लर्निंग रिसोर्स बनाने के लिए समझना है कि जस्ट अ मिनट, लर्निंग रिसोर्स बनाने के लिए समझना है कि अपना भी लर्निंग रिसोर्स होना चाहिए, प्रोप्राइटरी। अपना माने आप एज अ टीचर, एज अ मेंटर, आपका अपना। सो एक सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स। कोई भी कोर्स का अगर आप सीख रहे हो, यू चेक आउट उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम है क्या नहीं, मतलब इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड एट द एंड व्हाट इज द आउटकम। देन मेंटर शुड सेंड हिज ओन वीडियो टॉक्स इन एडवांस। अगर आज का क्लास का अगर मैं 5 मिनट 7 मिनट का वीडियो पहले भेजता तो और बेटर होता। एक छोटा वीडियो शायद मैंने भेजा है टॉपिक के ऊपर, लेकिन अगर 7-10 मिनट का एक पूरा वीडियो टॉपिक को थोड़ा डिस्क्राइब करके, देन इट वुड हैव बीन इवन बेटर। नाउ ऑन अ रेगुलर, आज का तो चलो वन ऑफ है, अगर रेगुलर है तो द टीचर्स मस्ट प्रिपेयर, एंड इट्स सो इजी टू प्रिपेयर फ्रॉम मोबाइल दिस डेज। सो मेंटर सेल्फ वीडियो, नाउ मेनी कॉलेजेस हैव स्टार्टेड मेकिंग फॉर्मल स्टूडियो वीडियो, स्टूडियो बना के बैठा के पूरा। मैं तो विश्वजीत जी को ही बोला, आप एक स्टूडियो बनाओ ICA में, जहां पे एवरी
टीचर जो आपके कोर्स का वो है, गाइड है, मेंटर है, मैं टीचर तो बोलता नहीं, मेंटर है, उनका शॉर्ट वीडियोस भी सब्जेक्ट के ऊपर बना के पहले भेजिए. सपोज समवन इज MBA इन टूरिज्म मैनेजमेंट एंड समवन इज टीचिंग हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड 1-2 वीडियो पहले बना के भेजिए, because that creates more interest, and it may be in the local language, it may be made in Nepali and shared with all. That makes it very interesting. So you understand some basic concepts and then you come and read or discuss it in English or a formal way. So mentor self video, mentors podcast. अगर वीडियो बना टाइम नहीं है या उसमें स्टूडियो या खर्चा ये सब लगता है तो ऑडियो बनाइए. Easily you can make audio. नोखा लक्ष्मी जी, आप अपना म्यूट कर दीजिए. राइट. सो नेक्स्ट इज मेंटर पॉडकास्ट ऑडियो. तब ऑडियो बनाएंगे आराम से, पूरा जो बोल रहे हैं कोई 10-15 मिनट का ऑडियो बना के उसको भेज दीजिए थ्रू व्हाट्सएप भेज दीजिए इजीली. सो वीडियो ऑडियो इज अ प्रोप्राइटरी लर्निंग रिसोर्स. स्लाइड शो जो मैं अभी दिखा रहा हूं वो मेरा प्रोप्राइटरी लर्निंग रिसोर्स है. इसी स्टाइल में और लोगों ने नहीं बनाया, मैंने बनाया, तो ये मेरा प्रोप्राइटरी है. सो देयर मस्ट बी प्रोप्राइटरी स्लाइड शोज. पर्सनलाइज्ड लैब या स्टूडियो, अगर प्रैक्टिकल है तो लैब या स्टूडियो का लर्निंग कंटेंट. मैंने कोई चैप्टर लिखा है, अगर मेंटर हैज रिटन अ चैप्टर और बुक और आर्टिकल्स दैट कैन बी शेयर्ड. इन्फो Hello? Hello? सर्कोमा के भयो के टेक्निकल के भयो. लेट्स वेट. हजुर यो फर्म भर्ने कुरा छ नि हजुर. हजुर हजुर. ए यो के सर्टिफिकेट पनि पाउँछ हामीले? सर्टिफिकेट्स अवार्ड हुँदैन है, अटेन्डेन्स सिट उसको लागि मात्रै हामीले सेयर गरेको अहिलेको लागि. ए हस् हस्. एकचोटि काइन्डली सबैजनाले भनिदिनुहोस् न. हस्. सरकोमा के टेक्निकल एरर आयो जस्तो चाहिँ एकैछिन वेट गरौँ न है, म कल पनि गरिहाल्छु सरलाई. हजुर म्यागी, I think Maggie is ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, के छ सर? सरकोमा इन्टरनेट प्रब्लम भयो जस्तो छ. I think Anand, in the meantime, we can play one video, testimonial video, till we get this glitch restored. So he has started. When I first joined IGNOU MBA, I had lots of questions in my mind. Would I be able to complete this, as this was a distance learning course? However, with the guidance from Vishwajit sir and his team, along with my self-motivated approach, I was able to complete this course on time without affecting my other priorities. So when I think about IGNOU MBA as a whole, it reminds me of 5 things, and I would like to share those 5 things with you guys today, and hopefully some of these No, it's would good. be a good. Let that video continue. Very good.
वो 5 थिंग्स को बता देने बोलिए, फिर मैं मेघ बुजल से बात करूंगा। आप थोड़ा को बता दो, इट्स गुड। शो दैट 5 थिंग्स, क्या बोल रहा था वो वीडियो में? यस, आनंद जी, या कंटिन्यू। Takeaway for all कोई भी as a पॉइंट को whole बीच में नहीं काटना team. चाहिए। Along with when I first joined IGNOU MBA, I had lots of questions in my mind. Would I be able to complete this, as this was a distance learning course? However, with the guidance from Ujjwal sir and his team, along with my self-motivated approach, I was able to complete this course on time without affecting my other priorities. So when I think about IGNOU MBA as a whole, it reminds me of 5 things, and I would like to share those 5 things with you guys today, and hopefully some of these would be a good takeaway for all of you. The first thing it reminds me is about flexibility. It not only allows you to prioritize your career, your family, it also allows you to prioritize other responsibilities. Being a distance learning, a lot of things were done digitally, a lot of things were done virtually, which helped me to save a lot of time and work on my own pace. As colleges can be very expensive, and while we are trying to work full time, save some money, IGNOU allowed me to have an affordable choice, because it not only allowed me to get my education, get my skills, it also allowed me to be within my budget, which was very important. The most important factor which I consider while studying at IGNOU was its quality. The quality of the faculties, the quality of the team, Ujjwal sir and his team was second to none. They had a fantastic team who had a lot of expertise in their own field. When I look back into these 4 or 5 important factors what I learned from IGNOU, and when I look into myself right now, it has helped me to shape what I am right now at present. I have used a lot of my learnings, what I did at IGNOU, to my present work environment as well. When I came to Canada, I was also able to transfer those certificates and make it equivalent to what Canada Is the has video gone? offered me. So there was something called IQAS, International Then can I Qualification start Assessment System, discussing? which also Yes, sir. Yes, you can continue. Okay, As- okay. One good thing, the gentleman was such a good speaker. He was such a charming man and such a good speaker. I was enjoying the talk. This is good communication, good example of good communication. Mr. Bhujel is not here. He picked up the hand wanted to ask something, it seems, but he is not there. I will, when he comes back in this discussion, I'll again ask him. I'll continue sharing the screen where I was. Are you seeing the screen, Padmaji? Yes, sir, it is visible, sir. Okay, I will, yeah. So I was telling that these are the various ways. I will request Padmaji to share this presentation with you all, with all the people who are present here. So I will send it to Padmaji later on, and she can send it to all the people who have attended. And up to you whether you want to share with others also. I have no problem. So basically, I was telling that there's in new age learning, there has to be proprietary content through video, case study, slideshow, audio of the mentor himself or herself. That must be shared in advance. साथ में चैप्टर्स लिखा है, केस स्टडी किया है, तो अच्छी बात है. And along there should also curated and aggregated content. Curated and aggregated content means the content which is available in YouTube, URL of sites, PDFs of chapters, slide share presentations of the internet, text and reference books, journal articles, charts, infographics, MOOCs, massive open online course MOOCs, paid online course like Coursera, and all these things which are available on that topic, given topic, which are available in the market, in the internet, that must also be shared. And all this together, when you do your proprietary content and you do your aggregated content, you have to share. Then only you can deliver. How do you share? ये सारे content को arranging all the content in increasing order of difficulty. Suppose the topic is MBA का integrated marketing communication. Suppose
और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक वीडियो आपने बनाया, मेंटर ने बनाया, सबसे पहले उसको रखो, फिर एक ऑडियो रखो, एक पीपीटी रखो, उसके बाद एक वीडियो मिला यूट्यूब में तो उसको रखो, एक पॉडकास्ट मिला या एक पीडीएफ मिला, चैप्टर मिला, उसको रखो, अगर प्रेस्क्राइब्ड बुक का कोई चैप्टर है तो उसका पीडीएफ पर रखो. सो यू पुट ऑल दिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी. तो और everything is not to be studied only. Something are to be watched, films. Some things are to be heard, audio. Some things are to be studied, text. Something are to be case study. So there must be variety to read, listen, and watch. Then using a learning management system, which is a software for creating, distributing, and managing educational content, send this content to your learner. अगर आपके पास LMS नहीं है, जैसा हम लोग एमिटी यूनिवर्सिटी में मैं डीन था, वहां हम Amazon यूज करते थे. एडामस यूनिवर्सिटी में मैं प्रो वाइस चांसलर था, आज वहां पे कंसल्टेंट हूं, वहां हम लोग कैनवास बोल के एक LMS यूज करते हैं. अभी डैफोडिल यूनिवर्सिटी में अभी स्ट्रेटेजिक एडवाइजर एंड प्रोफेसर हूं, वहां हम लोग BLC यूज करते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग सेंटर. सो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से you send all this learning material to your learners. Now, अगर आपके पास नहीं भी है LMS तो भी कर सकते हैं. गूगल क्लास बोल के होता है, गूगल क्लास में या MS टीम्स में आप उस सबको अपलोड कर सकते हैं. कुछ भी नहीं है तो कम से कम व्हाट्सएप में अपलोड करना शुरू कर सकते हैं. फिर उसको डिलीट भी करना होगा, इसलिए जिनको आपने अपलोड किया दे शुड डाउनलोड इट ऑन देयर लैपटॉप्स एंड देन यू कैन डिलीट. मिनिमम कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं. सो द पॉइंट इज, ये कंटेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी में रखने का है. क्रिएटिंग इंटरेस्ट लेवल थ्रू यूज ऑफ कंटेंट इन रीड, लिसन एंड वॉच. देन यूजिंग लर्निंग सिस्टम टू डिलीवर कंटेंट. क्लासरूम होता है. क्लासरूम मीन्स when as a student, as a learner, I get my mentor's content, learning content in advance before the class. The class is on integrated marketing communication. I get the matter 10 days in advance. And I study in my own time, at my own place, and at my own pace. अपने speed में, अपनी जगह में, अपने समय में. I study this. And then I come to the digital or physical classroom. Digital classroom ये अभी जो हो रहा है. Physical classroom जब आप face to face मिलते हो. So I come there after having read the material, watched the films and all, and then when I come, I am better informed for discussion. Discussion better हो सकता है because मुझे background सब मालूम है. So delivery जो होगा वो synchronous होगा, मतलब mentor learner एक साथ मिलेंगे जो अभी हम लोग मिल रहे हैं, या asynchronous होगा जो पहले से मैंने सामान भेज दिया, आपने देख लिया, या आप कोई इसका प्रैक्टिकल भी हो सकता है, फिजिकल, लैब, स्टूडियो, डिलीवरी, जो सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करे. साइंस सब्जेक्ट जो है वो प्रैक्टिकल भी होगा. सो डिलीवरी कैन बी सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस. एसिंक्रोनस मतलब अलग अलग टाइम में सब देखते हैं. सिंक्रोनस मतलब एक साथ में पढ़ते हैं. और व्हाट्सएप ग्रुप, ई ग्रुप को एम्पलीफाई यूज कर सकते हो. जूम, MS टीम, वेबएक्स, गूगल मीट को यूज कर सकते हो. डिफरेंट इम्पार्टर्स नाम का एक लर्निंग टेक्नोलॉजी, उसको यूज कर सकते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा कंटेंट देते जाएंगे. ऑर्गेनिक लर्निंग मतलब लर्नर को अपने लेवल में सीखने के लिए उसको कुछ कुछ आप शेयर करते जाएंगे, चाहे ईमेल से शेयर करो या व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर करो. सबसे इजी होता है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना, आपको मालूम है. फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंटेशन को तो मैं व्हाट्सएप में भी, ईमेल में या व्हाट्सएप में किसी में भी भेज सकता हूँ, अपना पद्मा जी को, और पद्मा जी यही चीज को व्हाट्सएप में आप लोगों को भेज सकते हैं इजीली, और ईमेल में भी भेज सकते हैं. सो द पॉइंट इज, दीज आर द वेज ऑफ डिलीवरिंग द रिसोर्स. पर डिलीवर करना ही एनफ नहीं है, डिलीवर के बाद एंगेज होना चाहिए. अगर लर्नर एंगेजमेंट नहीं है, लर्नर का एंगेजमेंट नहीं है, तो द एजुकेशन इज नॉट कंप्लीट. तो लर्नर्स एंगेजमेंट के लिए आपको एक तरफ से आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन लर्निंग को आप यूज कर सकते हैं. फेसबुक में भी ग्रुप बना सकते हैं, FB ग्रुप. आज बहुत लोग FB ग्रुप बनाए, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप तो सब लोग ने बनाया.
आप गूगल फॉर्म्स ओपिनियन सर्वे कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आज जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये मैटर आप लोग को ये व्हाट्सएप ये प्रेजेंटेशन मिल जाए और जो डिस्कशन हुआ इस पे गूगल फॉर्म आपको भेज दे अगर पद्मा जी, तो आप उसमें ओपिनियन दे सकते हैं. वो सारा ओपिनियन ऑनलाइन में आ जाएगा. सो गूगल फॉर्म ये एंगेजमेंट है. पोल कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं ड्यूरिंग एंड बियॉन्ड द सिंक्रोनस क्लास. ये क्विज भी कर सकते हैं. और डिबेट्स एंड डिस्कशन, डिजिटल क्लास हो या फिजिकल क्लास हो, डिबेट्स एंड डिस्कशन होना जरूरी है. वर्चुअल लैब मतलब जो लैब अगर आप क्लास में नहीं आ सकते हो लेकिन लेबोरेटरी का काम करना है या लैब का फिजिकल काम करने के पहले वर्चुअल में हो सकता है. आजकल ये कॉन्सेप्ट आया, पूरा मशीन देख सकते हो वर्चुअली एज इफ आप काम कर रहे हो. एकदम लास्ट मोमेंट का जो 30% नॉलेज है उसके लिए आपको जाना होगा लैब में या स्टूडियो में. 70% आप वर्चुअली कर सकते हो. एक्चुअल लैब एंड स्टूडियो बाद में आएगा. फील्ड विजिट्स एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, जितना आप रिपोर्ट प्रेजेंटेशन या फील्ड विजिट करेंगे उतना एंगेजमेंट बढ़ेगा लर्नर का. सो न्यू एज एजुकेशन का सबसे बड़ा, द बिगेस्ट वैल्यू ऑफ न्यू एज एजुकेशन इज एंगेज्ड लर्नर और लर्नर्स एंगेजमेंट. जितना ज्यादा एंगेजमेंट है उतना ज्यादा सफल है. सो फील्ड विजिट्स एंड रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, थीमेटिक एंड सिलेबस और केस स्टडी प्रेजेंटेशन. अगर पूरा सिलेबस को डिवाइड करके 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 टॉपिक बना के उनको प्रेजेंटेशन करने बोलना, थीमेटिक बोलना या केस स्टडी बोलना. समझो वी आर लर्निंग ब्रांड कम्युनिकेशन. अगर हम लोग वो करें कि आप सैमसंग ब्रांड पे प्रेजेंट करो, आप मुस्तांग पे करो, आप ट्यूबोर्ग पे करो, रुसलान पे करो, या आप क्या कुछ और ब्रांड पे, कार्बन पे करो. सो वो जो केस स्टडी प्रेजेंट करते हो दैट इज अनदर एंगेजमेंट. और एंगेजमेंट जूम, स्काइप, गूगल हैंगआउट, गूगल मीट से बढ़ा सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम से कर सकते हैं. सो दीज आर द वेरियस वेज इन विच यू कैन एंगेज योर लर्नर. जो फिजिकल क्लास हो रहा है वो तो होगा ही, लेकिन फिजिकल के साथ ये होना जरूरी है. और अगर फिजिकल करने का स्कोप नहीं भी मिल रहा है तो भी ठीक है, तो भी ऑनलाइन में ये सब कर सकते हैं. इशू इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द एंगेजमेंट हैज टू बी कंटिन्यूअस. सिर्फ 4 घंटे का क्लास के लिए एंगेजमेंट नहीं है, दैट इज द मिनिमम, बट इट हैज टू बी कंटिन्यूअस. द प्रॉब्लम इज दैट वन नीड्स सेल्फ मोटिवेशन स्ट्रांगली. जो अभी वो भाई साहब बोल रहे थे इन द वीडियो कि आई वाज सेल्फ मोटिवेटेड टू कंप्लीट माय कोर्स प्रॉपर्ली. So it's important that you must be self-motivated to do the work. Otherwise, if I don't love my work, my own qualification, acquiring qualification and skills, nobody can help me doing that. So that's learners engagement. Learners engagement को आजकल बढ़ाने के लिए, this is not so common in context of India or Nepal, but advanced country के लिए है कि आप artificial intelligence, machine यूज कर सकते हो, पर्सनलाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, एआई बॉट्स, एनालिटिक्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जो गॉगल्स में पहना के वर्चुअल रियलिटी का इमेज दिखाते हैं, वो कॉग्निटिव बिहेवियर को ट्रैक करना, सोशल लिसनिंग टूल के माध्यम से, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स यूज करना. नाउ दीज आर गेमिफिकेशन, गेम्स करना, गेमिफिकेशन ऑफ लर्निंग. नाउ दीज आर एडवांस्ड टेक्निक्स by which you can, the learner is engaged in the learning process. This may not be easily done in our context, our economy, but ये वाला बहुत easily होगा. ये जो है, this can be done very easily. There is no problem of doing this. So that's my next point is that learner से, तो हम लोगों ने अभी तक जो बात किया, एक मिनट, sorry, अभी तक लोग हमने जो बात किया from the beginning, जो लोग लेट आए होंगे या रिवीजन के हिसाब से भी, because now I will be asking you also, टीचर्स को मेंटर बनना है, ये पहले हमने बात किया. स्टूडेंट को लर्नर बनना है, और डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है वो भी बात किया. फिर 4 टास्क है मेंटर को: लर्निंग कंटेंट बनाना, डिलीवर करना, एंगेज करना, इवेल्युएट करना. 4 कंटेंट. लर्निंग कंटेंट बनाने में अपना खुद का कंटेंट, प्रोप्राइटरी सेल्फ लर्निंग कंटेंट, मेंटर का खुद का वीडियो, ऑडियो, स्लाइड शो सब बनाना, केस स्टडी. तो दिस इज proprietary content. Here, whatever is available in the internet or in books, YouTube, URL, PDF, text, reference books, journal article, charts, जो available है, MOOCs, वो available चीज को aggregate करना.
ये दोनों को करके इसको अरेंज करना है, इजी सबसे ऊपर, थोड़ा टफ और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टफनेस में इसको एंगेज करना, इसको अरेंज करना करके। समझो 8 आइटम है, एक टॉपिक पे 8 आइटम है, ये 8 आइटम को हम एडवांस में भेजेंगे, 1 सप्ताह 10 दिन इन एडवांस, so that people can learn at their own time, at their own space or place and at their own pace, speed, अपनी जगह में। और हाउ डू यू सेंड इट? LMS यूज करिए, LMS नहीं यूज करते तो कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप या गूगल क्लासरूम यूज कीजिए। तो पहले जो आपने भेजा, द लर्नर लर्न्स इट देमसेल्व्स एंड देन कम्स इन द क्लासरूम, सो दैट इज फ्लिप क्लासरूम। और डिलीवरी सिंक्रोनस असिंक्रोनस, ये तो मैंने पहले बताया। फिर लर्नर को एंगेज करने के लिए सोशल मीडिया यूज कीजिए, गूगल फॉर्म यूज कीजिए, पोल एंड क्विज कीजिए, डिबेट्स एंड डिस्कशन कीजिए। ऑनलाइन में भी डिबेट होता है, आप जूम को ब्रेकआउट रूम बना सकते हैं। आपने पहले दूसरा रूम में घुसा था, फिर ये रूम में आए, मतलब ब्रेकआउट रूम बना सकते हैं करके पीपल कैन डिस्कस एंड डिबेट एंड कम बैक। वर्चुअल लैब एंड स्टूडियो हो सकता है, फिर एक्चुअल लैब एंड स्टूडियो, एक्चुअल क्लासरूम भी होगा, फिर एक्चुअल फील्ड विजिट, फिजिकल फील्ड विजिट, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन, दिस। So in these manners, you can engage the learner, and you can use advanced technology of AI, ML and others, Google Analytics and all, also to engage if you want, those institutions want. Finally, how do you conduct exams? Now, exam word से मेरा problem है। Exam का मतलब ही है punishment, fail, pass। Exam नहीं, evaluation। मैंने कितना सीखा उसको इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करने के लिए मैं कितना जानता हूं, शुरू में एक क्विज करना चाहिए। तो क्विज में डायग्नोस्टिक क्विज। नाउ आई एम नॉट अ रेगुलर मेंटर फॉर यू, अदरवाइज इफ आई वर रेगुलर मेंटर, पहला दिन ही मैं क्विज करता कि इस टॉपिक पे आपको नॉलेज कितना है। तो उससे क्या होता है, द मेंटर लर्न्स हाउ मच द टीम इज अवेयर। तो डायग्नोस्टिक क्विज उसको बोलता है। जैसा डॉक्टर का डायग्नोस्टिस होता है, डायग्नोसिस करके बीमारी का पता चलता है, उसे एक क्विज के माध्यम से, एक क्वेश्चनियर के माध्यम से आई कैन, एंड द क्विज कैन बी डन ऑनलाइन इजीली on your Zoom itself, it can be done immediately. So quiz करके मत मालूम होता है कि how much the audience is aware. Then I get into formative and summative. Formative माने जब आप टॉपिक को या चैप्टर को पढ़ रहे हो, कोर्स को पढ़ रहे हो, the classes are happening, some tests, some assignment, some check should be there during that. डिबेट करना हो सकता है, क्विज करना हो सकता है, असाइनमेंट, होम असाइनमेंट हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है। ऑल दीज आर फॉर्मेटिव असेसमेंट। और समेटिव जब कोर्स खत्म हो गया, उसमें प्रोजेक्ट राइटिंग हो सकता है, रिटन एग्जाम होगा, वाइवा होगा, वो सब होगा समेटिव। तो डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव एंड समेटिव तीनों लेवल होना चाहिए। और फ्लेक्सिबल ऑनलाइन एग्जाम कर सकते हैं। आजकल तो ओपन बुक एग्जाम भी आया। क्वेश्चन ही ऐसा है कि नॉन गूगलेबल है, आप गूगल कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन ही ऐसा है। There, for example, if you are asked after reading a chapter on advertising marketing के बाद, you are asked, suppose we are launching a bike that can go on road and in water, both. What name will you give to this bike? What will be its slogan, its campaign, its launch plan? ये सब क्या होगा? Now, all these questions when you are asking, these questions cannot be googled. आप किताब खोल के लिखो इसको, कोई बात नहीं, किताब में कुछ आंसर है ही नहीं इसका। If you know what is advertising campaign, if you know what is integrated marketing, communication, if you know what is slogan, you can do this for this one. So there are many, one exam system which is proctored, which is non-googleable open book system. दूसरा है प्रोक्टर्ड ऑनलाइन, मतलब आपका कैमरा, लैपटॉप का कैमरा ऑन होगा, आप एग्जाम दे रहे हो, कैमरा से आपको ऑब्जर्व किया जाएगा और यू कैन बी केप्ट ट्रैक ऑफ। तो दैट इज अनदर प्रोक्टर्ड ऑनलाइन। फिर फील्ड बेस्ड, गो टू द फील्ड, एक टास्क दे दिया, समझो एक पर्टिकुलर ब्रांड कैसा कर रहा है, हाउ इज दिस ब्रांड परफॉर्मिंग इन द मार्केट, किसी ने टास्क दिया। सो ब्रांड, कोई भी ब्रांड ले लो, सैमसंग, मुस्तांग, कुछ भी ले लो, वो जूता का ब्रांड है, कोई भी ले लो, गोल्ड स्टार है। सो यू गो फाइंड इट फ्रॉम 10 कस्टमर्स, 10 शॉप्स, फाइंड करके फॉर्मेट में रिपोर्ट लिख के जमा दिया।
That is one assignment, field-based assignment and report. Research-based assignment, मतलब जो already social media में या कहीं जगह में है, उसको इंटरनेट में है, उसको रिसर्च करके आपने रिपोर्ट बना के लिखा, वो रिसर्च-based, secondary research, वाला field primary research. फिर केस स्टडी प्रेजेंटेशन, सिलेबस का टॉपिक पे प्रेजेंटेशन, दीज आर ऑल इवैल्यूएशन. प्रोजेक्ट बेस्ड प्रेजेंटेशन, लाइव प्रोजेक्ट विद अ क्लाइंट, प्रोजेक्ट बेस्ड. ऑनलाइन ऑफलाइन इंटर्नशिप, दैट्स आल्सो इवैल्यूएशन. फिजिकल लैब या स्टूडियो का असेसमेंट, माने जो पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट में है, लैब या स्टूडियो में. लाइव रिटन असेसमेंट, फिजिकल जो आप बैठ के परीक्षा देते हैं. इंटरव्यू, वाइवा या रिपोर्ट लिखना, डिजर्टेशन करना. रिपोर्ट, डिजर्टेशन जो एग्जाम आप देखते हैं वो डिजर्टेशन मास्टर्स में भी होता है. तो ये सारा, तो दीज आर ऑल्सो इवैल्यूएशन. तो इसमें देखोगे 16 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन है, 16 टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आई हैव डिस्कस्ड हियर. सो आई विल कंक्लूड द क्या बोलते हैं द PowerPoint presentation and come to a discussion mode now. So what we have discussed is the new age learning is physical plus digital, blended या phygital. New age learning, the mentor, teacher खत्म हो जाएगा, mentor आएगा, student से हटके learner आएगा. अब उसमें age कुछ है ही नहीं. Mentor can be 25-year-old, learner can be 55-year-old, nothing. I am 56, but I can learn in AI, artificial intelligence, from a 32-year-old person. No problem. Because that mentor is introducing the topic to me. Now, the introduction of the topic has to be through proprietary resources. जो mentor है उसका अपना resource, video, audio, slide show सब, and जो मैं internet से लाया आपके लिए, वो भी. So this is how, and this method should come to you in advance. So new age learning is about involved learning, engaged learning. New age learning is about online, offline together. New age learning is not about giving written exam only. Written exam is small part. Case study, presentation, research paper, these are also part of the new age learning. So Viva, all that. So new age learning is about engaging technology with our learning. New age learning need not be expensive. New age learning, as we know, can be from remote as well and can be inexpensive. But the basic point, traditional पढ़ाई में, traditional शिक्षा में imposed learning था, डंडा मार के पढ़ाना जिसको कहते हैं, imposed learning था. New age learning voluntary learning है. मुझे सीखना है इसलिए मैं सीख रहा हूं, मजबूरी नहीं है. And their real education happens when it is voluntary, when it is self-learning. So these are the things I would like to stop here, and I would like to take your feedback, your comments, your questions, whatever. Each one of you, जितने लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, 14 जन हैं. Each one of you, one by one, I will take feedback from you and questions, and I'll respond to you. I will share this presentation with Padmaji, and I'll request her to send to you as well this presentation. So I will go to Sitaram Subedi ji. Namaste, namaskar. आप म्यूट हो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करके बात करो. नीचे अनम्यूट कहाँ आ रहा है? कैसे? कितना? हाउ हैव यू अंडरस्टूड? क्या लगा? कुछ भी कमेंट करो आज के डिस्कशन पे. Because of load shedding, I was connected later, so मैंने उधर सारे नहीं सुन पाया. ठीक है, थोड़ा लेट हुआ. जितना सुना उसमें से कुछ बोलो. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ठीक है, इंटरेस्टिंग है. प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगा, फिर आप देख लेना उसमें से. ठीक है, भरत जी, भरत तिरुआ, भरत जी बताइए. और वो म्यूट को निकालो. आप म्यूट हो, पहले तो अनम्यूट करो. अनम्यूट करो, नीचे देखो अनम्यूट है. अभी तो ये सब जान गए हो ना. बोला. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. It's me from Nepal. I'm teacher, English teachers at secondary levels. It's nice to listen the conversations like the legend people like you.
Do you think पीछे मुर्गा जो आवाज दे रहा है so आपका आज का discussion, is it useful to you in your own job? Will it be useful? Yes, sir. Yes, sir. Very beneficial in my classroom. Right. You can make your own audio and video and send to your students through WhatsApp. You can also get links of good videos which students should see depending on the topic and send it. That is the point I wanted to tell. Okay, fine. You will get the presentation later on and have a look at it. Thank you. Para Limbu, आप बताएं थोड़ा, tell what is your feedback, any question that you have? Namaste. Namaste. आपका आज क्या था, कैसा लगा, थोड़ा बताओ. I think today's session was very exciting, and it also gave me an idea regarding how to be a teacher who wants to teach online. Right. Because I'm doing a teacher training right now. Okay, where do you teach, madam? No, actually, I'm undergoing a training to teach online, to teach language online. So my question to Professor Ujjwal sir is, if I want to teach online 100%, will the students benefit, or will there be something lost in the teaching process? Hello, Ujjwal. Hello? Ujjwal sir? I think there is again an interaction, sorry, internet problem on this side. Parama? Azura. Let's read. Question type garu. You may type question. Sorry, पनि join गर्नु छ होला. अघि पनि यस्तो प्रब्लम भएको थियो सरको साइडबाट हैन. एकचोटि कनेक्ट गरि पनि हाल्छ सर WhatsApp मा. एकचोटि हजुर क्वेशन टाइप गर्दै गर्नुस् न. हजुर. म्याम यो कलेज युनिभर्सिटीको को लागि हामीले अनलाइन पढ्नको लागि हो कि के हो एक्चुअली? यो यस्तो हो सर, हाम्रो खास चाहिँ हामी इन्दिरा गान्धी नेसनल ओपन युनिभर्सिटीसँग एसोसिएट छौँ होइन. वी आर द पाइनियर इन्स्टिट्युसन. आइसिए भनेर हजुर सुन्नु नै भएको होला. बाइ द वे हजुरहरूले एडमिसन्सहरू त लिनुभएको छैन नि होइन, यहाँ आइसिएमा के लिनुभएको छ? यो इग्नु भन्छु नि म्याम, त्यही हो. हजुर हजुर. पहिलेदेखि धेरै पहिलादेखि मलाई थाहा छ यो. त्यही हो. जावलाखेलमा हामी चाहिँ पाइनियर इन्स्टिट्युसन हो. हामी चाहिँ ज्ञानेश्वरमा छौँ सर, लोक 6. अनि हामी भेरी सुन सिनेमा पहिलाको कुरा थियो त्यो. हजुर हजुर त्यो भयो. अनि यो खास ब्लेन्डेड लर्निङ भनेको चाहिँ अहिले कोभिडले गर्दा. अनि यो मैले मैले चाहिँ यो अनलाइन चाहिँ अब अनलाइन भएको हुनाले यो मैले मास्टर साइकोलोजी पढ्न खोजेको थिएँ कि यो छ हाम्रो यसमा कोर्स. साइकोलोजीको कोर्स चाहिँ अहिले करेन्टली अफर छैन सर. इग्नोमै चाहिँ सायद छ, त्यहाँबाट एडमिसन गर्ने हो भने दिल्लीबाट. आइसीबाट चाहिँ अहिले हामीले अफरमा राखेको छैनौँ. हजुर त्यो उताबाट हुने हामीले यसबाट केही कनेक्ट गर्न मिल्छ एडमिसन यताउता? त्यसको लागि चाहिँ हजुरले डाइरेक्टली युनिभर्सिटीसँग नै कन्ट्याक्ट गरेर एडमिसन लिनुपर्ने हुन्छ सर. हाम्रो यता अफर नभएको भएर हामीले त्यो गरिरहेको छैनौँ भनौँ न. हजुरले डाइरेक्टली उतै नै भएर गर्नुपर्ने हुन्छ. इग्नोको वेबसाइट्सहरू नि हेर्नुभयो भने कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू त्यहाँ पनि पाउनुहुन्छ हजुरले. एक्सक्युज मी, एउटा क्वेसन थियो. अब जस्तै दिल्लीबाट गऱ्यो भने इक्जाम दिन चाहिँ यहीँबाट मिल्छ कि नै? 2 चोटिसम्ममा सेन्टरमा रेजिस्टर गर्नुहुन्छ नि, त्यो सेन्टर बाहेक 2 चोटि चाहिँ एक्जाम दिन मिल्छ. थर्ड आइटम रेजिस्टर्ड सेन्टरमै जानु पर्यो होइन. दिल्लीको रेजिस्टर्ड सेन्टर कता छ? त्यही नै हो, दिल्ली नै हो? दिल्लीमा त थुप्रै रिजनल सेन्टर्सहरू छ. हजुरले कुनै ठाउँबाट पनि एडमिसन लिनुभयो भने तपाईँले नेपाल आएर एडमिसन इक्जाम्स दिँदा अथवा रेजिस्टर गरेको ठाउँबाट
बाहेकको ठाउँमा एक्जाम दिने चाहिँ 2 चोटिसम्म यु आर अलाउड भनौँ न। अनि एउटा अर्को क्वेसन म यहीँबाट नै गर्छु होला, BCA को लागि BCA को लागि भोलि अथवा पर्सि एडमिसन गर्न मिल्छ कि नै? यसको लागि चाहिँ हजुरले यस्तो गर्नुहोस् न, सिन्स द एडमिसन डेडलाइन वाज यस्टरडे होइन, हाम्रो अफिस अहिले आज खुला पनि छ होला, हजुरले यो आफ्टर द सेसन एकचोटि हाम्रो सपोर्ट डिपार्टमेन्टमा गएर भिजिट गर्नुहोस्, त्यहाँ म्यामहरूले गाइड गर्नुहुन्छ। म त्यहाँ पनि गएँ होइन, त्यहाँ पनि कुरा भएको म्याम चाहिँ अनि के अरे आज अलिकति व्यस्त हुनुहुन्छ, के अरे धेरै हुनुहुन्छ नि त मान्छेहरू, अनि भ्याउनु भएको थिएन। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ के भन्नुभएको थियो, आउनु चाहिँ भन्नुभयो, तर मसँग चाहिँ आज पुगेन क्या एडमिसन गर्न, भोलि अथवा पर्सि मात्र हुन्छ मसँग क्यास, अथवा आज अलिकति एमाउन्ट डिपोजिट गरिदिएर भोलि अथवा पर्सि ल्याइदिन मिल्छ कि? त्यो बेसिसमा त सायद त्यो हामीले प्रोसेस गर्दैनौँ होइन। यस्तो गर्नुहोस् न, भोलि हाम्रो सन्डे डे अफ हुन्छ होइन, आज चाहिँ 5:30 सबै ओपन हुन्छ। हजुरले त्यस्तो आज तपाईँलाई त्यस्तो प्रब्लम छ नि, एकचोटि मन्डे बिहानै 10 o'clock 10:15 तिर एकचोटि कल गर्नुहोस् न त। 10:15 एडमिसन पाउन चाहिँ पाइन्छ जे होस्, 10:15 तिर एकचोटि कल गर्नुहोस्, सबै प्रोसेस हुन सक्छ। हामीले प्रोसेस गर्दै गरेको हुन्छौँ, त्यो बिहानकै डिस्प्याच हुने गरी ड्राफ्टहरू बन्नु। अनि आज चाहिँ कति बेलासम्म खुल्छ? हामी 5:30 हुन्छ सर, 1 देखि 2 चाहिँ लन्च टाइम हुन्छ। ओके, आज भयो भने आजै गर्छु होइन? हुन्छ हुन्छ हजुर, सेफ साइडमा बस्नको लागि एक्सटेन्ड हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, लास्ट आवर किन कुर्ने होइन, पढ्नु नै हुन्छ भने त्यसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने हिसाबले एडमिसन चाहिँ गर्नुभयो भने हुन्छ 5:30 भित्र। ओके, अनि एउटा क्वेसन थियो कि, अब जस्तै हामीले कति मार्कको थ्योरीको इक्जाम हुन्छ थ्योरिटिकल? हाम्रो टोटल मार्क्स 100 हुन्छ होइन, 100 मा 70% वेटेज चाहिँ टर्म एन्ड एक्जामिनेसनले क्यारी गर्छ र 30% वेटेज चाहिँ तपाईँको असाइनमेन्ट्सले क्यारी गर्छ। पास चाहिँ सेपरेटली दुईटैमै हुनुपर्ने हुन्छ र सेपरेटली नै हुनु पर्यो? हजुर, BCA को इन्क्वायरी गर्नुभयो होइन? हजुर, BCA मा चाहिँ तपाईँहरूको ल्याब कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ, ल्याब कम्पोनेन्टलाई पनि छुट्टै पास गर्नुपर्ने हुन्छ भनौँ न। भनेपछि सबै सेक्टरमा छुट्टा छुट्टै पास गर्नु पर्यो? हजुर हजुर, तर इभ्यालुएसन चाहिँ 100 मै गर्छ कि, 100 मै हुन्छ, पछि ओभरअल चाहिँ फाइनल ट्रान्सक्रिप्ट आउँदाखेरि चाहिँ 100 मै गरेर आउँछ। एउटा दाइ पढिराख्नु भएको थियो, दाइले चाहिँ के भन्नुभएको थियो, थ्योरिटिकलै 100 मार्कको हुन्छ भन्नुभएको थियो रिटनमा। 100 को इभ्यालुएसन मार्क्स आउँछ एक्जाममा होइन, तर त्यसले वेटेज चाहिँ 70% मात्रै क्यारी गर्छ क्या फाइनल ग्रेडमा। हजुर, भनेपछि टोटल कम्बाइन भएर पास भएर भएन, हरेकमा पास हुनु पर्यो? हजुर, सेपरेटली पास हुनु पर्यो। अनि पछि ओभरअल 100 मै ओभरअल ग्रेडमा चाहिँ तपाईँको 100 मार्क्समा कन्भर्ट गरेर निकाल्छ कि। ओके ओके हजुर, आई थिङ्क हाम्रो सरको अलिकति इन्टरनेट प्रब्लम नै भयो होला, सरलाई मैले त कनेक्ट गर्न खोज्दाखेरि पनि उहाँकोमा कनेक्सन भइरहेको छैन। पराम्याम यस्तो गरौँ न, हजुरले मलाई क्वेसन्सहरू बिसाइड्स पराम्याम कसैको त्यस्तो छ भने म च्याट बक्समा एउटा इमेल एड्रेस ड्रप गर्छु हजुरलाई होइन, त्यसमा एकचोटि हजुरहरूले सेयर गरिदिनु भयो भने म सरसँग कन्सल्ट गरेर अलङ विथ द स्लाइड्स हजुरहरूको क्वेरी विथ नेम पठाउनु होला, म फरवर्ड गर्छु। हेलो, त्यो बाहेकको हजुरहरूलाई यो सेसन बाहेकको कुनै क्वेसन्सहरू छ रिलेटेड टु एडमिसन एट इग्नु थ्रु ICA हाम्रो कोर्सेसको बारेमा? 100 मा पास मार्क्स कति हुन्छ भन्नुभएको छ हाम्रो DBM सरले होइन, 35 हो सर, तर BCA मा चाहिँ कुनै कुनै सब्जेक्ट्सको 40 पनि छ होइन, एउटा सब्जेक्ट्सको 40 होला, बिसाइड्स द्याट 35 कै पास मार्क्स छ। हामीसँग सेसनसँग रिलेटेडको क्वेरिजहरू चाहिँ नि मैले च्याट बक्समा एउटा इमेल एड्रेस दिएको छु हजुरहरूलाई होइन, त्यसमा फरवर्ड गरिदिनु होला, अलङ विथ द स्लाइड्स म हजुरहरूलाई फरवर्ड गर्छु। र त्यो बाहेकको रिलेटेड टु एडमिसन एट ICA कुनै पनि कोर्सको बारेमा बुझ्नुपर्ने छ त्यस्तो केही छ भने हजुरहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क क्वेसन्सहरू अलमोस्ट आन्सर भएको छ होइन। म्याम, यो एज रेस्ट्रिक्सन के छ यो कोर्सहरूमा? एज रेस्ट्रिक्सन्स 18 अबभ हुनुहुन्छ भने यु आर एलिजिबल इन एनी कोर्स इन एनी प्रोग्राम। म चाहिँ ब्याचलर इन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स हो होइन, अब हामीले अरू कुन कुन फ्याकल्टी यसो जोइन गर्न मिल्छ होला? ब्याचलर्स इन हजुरको यस्तो छ सर, हाम्रो तपाईँले कुन फ्याकल्टी जोइन गर्न मिल्छ भन्दा पनि हजुरहरूको रिक्वायरमेन्ट कस्तो छ, के फिल्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन? म चाहिँ टिचिङ फिल्डमै हो अहिले। टिचिङमा हुनुहुन्छ भने हजुरले हाम्रोमा अफर भएको एउटा अहिले मास्टर्स अफ आर्ट्स एन्ड इङ्ग्लिस भनेर एउटा प्रोग्राम छ MEG भन्ने,
त्यो कोर्स लिनुभयो भने सायद हजुरलाई बेनिफिसियल होला। कुन सब्जेक्ट? फेरि भन्छ त त्यो कोर्सको नाम? मास्टर्स अफ आर्ट्स इन इङ्ग्लिस, MEG। MEG? हजुर। हजुरले कुन सब्जेक्ट टिच गर्दै हुनुहुन्छ? म त साइन्स। साइन्स पढाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर। साइन्स पढाउँदै हुनुहुन्छ भने त इङ्ग्लिस, त्यो त इङ्ग्लिस रिलेटेड हो। हजुर, इङ्ग्लिस भयो। फेरि टिचिङ फिल्डमा जानुभएको म्याक्सिममहरूले त्यो लिनुहुन्छ होइन? हजुर। त्यस्तो त्यो हामीले गर्न पाइन्छ भने त्यो गर्दा त राम्रै हो नि, इङ्ग्लिस राम्रो भएको राम्रै हो। मिल्छ सर, त्यो मिल्छ। हजुरको मात्रै एउटा कस्तो छ भने त अहिले नै क्लियर गर्दा बेटर, जो ब्याचलर्स इङ्ग्लिस मेजर लिएर आउनुभएको हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ अब MEG-मा हामीले इक्विभ्यालेन्स प्रोभाइड दिन्छ, ट्युले नै दिन्छ भनौँ न। तर जस्तो हजुरको यो इन्भाइरोमेन्टल र इन्जिनियरिङबाट ब्याकग्राउन्डबाट आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले MEG पढ्नुभयो भने इक्विभ्यालेन्समा चाहिँ ट्युले दिँदैन कि। तर ब्याकग्राउन्ड ब्याचलर्स मेजर इङ्ग्लिस भएकोहरूले चाहिँ पाउनुहुन्छ फेरि उहाँहरूले। नत्र भए MBA पनि छ, एउटा प्रिमियम प्रोग्राम हो जहाँ पनि काम लाग्ने कोर्स हो होइन। हजुरले अब MBA चुज गर्दा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ पछि? प्रोग्राम सबै इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ, मात्र मैले हजुरलाई अवेयर गरिदिएको तपाईँको ब्याचलर्स इन्जिनियरिङमा छ भन्नुभयो नि त, इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा। त्यही भएर हामीले नपाउने होला त्यो। हो, TUले नै दिँदैन कि। जसको ब्याचलर्स इङ्ग्लिसमा मेजर चाहिँ उनीहरूले मात्रै MEG को पाउँछ। अनि MBA त पाउँछ, अरू सबैमा पाउँछ, खालि MEG को मात्रै यो स्पेसलाइज गरेको भनौँ न, इङ्ग्लिसमा मेजर गरेको। MBA को कति छ यसमा हाम्रो यो फुल? त्यसको लागि सर हजुरले मलाई एक्ज्याक्ट थाहा हुँदैन। एक्चुअली सपोर्टमै अहिले सायद बिजी हुनु भए तापनि हजुरले एउटा इमेल ड्रप गरिदिनुहोस् न, म्यामहरूले भनिदिनुहुन्छ, अथवा फोनमै गर्नुभयो भने पनि हुन्छ। फोन नम्बर छ हजुर? 44455। एकैछिन हजुर, कति? 444 फर्स्टमा 44455। हजुर, यो 01 होला? 01 कोड भयो, काठमाडौँको कोड भयो। 0 हजुर, 44455 40 4। एक्सटेन्सन हजुरले 113 119 र 105 भन्नुभयो भने सपोर्ट डिपार्टमेन्टले पिकअप गर्छ। त्यहाँ पनि फेरि भित्र आफैले उनीहरूले नै सजेस्ट गर्छ होला होइन? हजुर हजुर, फिजहरू उहाँले भनिदिनुहुन्छ। अथवा हजुरले अहिले यहाँ सपोर्टमा बिजी हुनुहुन्न भने म्यामहरू यो मिटिङ सकेपछि लिभ गरेर सपोर्ट डिपार्टमेन्टमा कनेक्ट गरेर त्यहाँ पनि बुझेर जाँदा हुन्छ नि। आइसक्नु भएको? कति भन्नुभएको छ बिर्से? एक्सटेन्सन 113 113 119 113 र 119 र 105 105। यो सब एउटै डिपार्टमेन्टको छ, त्यो सपोर्ट एडमिसन। थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। हामीसँग अझै क्वेसन छ भने लियौँ होइन, नत्र भए यो अनलाइनै हो नि होइन हजुर? हाम्रो चाहिँ ब्लेन्डेड लर्निङ हो सर। हामीले जुन अहिले सेसन नै त्यसमै गरिरहेछौँ होइन, अनलाइन भन्दा पनि। ब्लेन्डेड भन्नाले चाहिँ फिजिकल पनि भयो, अनलाइन पनि भयो। जस्तो असाइनमेन्ट्सहरू हजुरहरूले अनलाइनै सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। एक्जाम्सहरू तपाईँहरूको फिजिकल्ली नै हुन्छ, तपाईँहरूले आएर सेन्टरमा गएर केन्द्रीय विद्यालयभित्र हुन्छ होइन, इन्डियन एम्बेसीभित्र, त्यहाँ गएर एक्जाम्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ। र हामीले दिने क्लासेसहरू पनि अल्दो दे आर नट म्यान्डेटोरी, हजुरहरूलाई चाहिँ हामीले टिम्सबाट पनि दिन्छौँ। तपाईँ फ्याकल्टीसँग भेटेर कुरा गरेर क्लास लिन्छौँ। कुनै तरिकाहरू हामीले हेरेर मतलब फिजिकल क्लास पनि राखेको हुन्छौँ होइन। सो ब्लेन्डेड मिन्स तपाईँको अनलाइन पनि भयो होइन, फेस टु फेस पनि भयो कि, दुई तरिकाले हुन्छ। प्योरली अनलाइन अलि मेरो प्योरली अनलाइन टाढा भएको हुनाले अनि त फेरि काठमाडौँ आउन एक्सेस छैन। म महिना नगर होइन, हाम्रो खास आइसिएबाट एडमिसन लिने लर्नर्सहरू पनि सबै यहाँ यही नै रिसाइड गर्नु न होइन। कतिपय आउट अफ भ्याली हुनुहुन्छ भने कतिपय आउट अफ कन्ट्री पनि हुनुहुन्छ कि लर्नर्सहरू। अनि कसरी म्यानेज हुन्छ? हजुरहरूको यस्तो हो, हाम्रो यो एक त डिस्टेन्स लर्निङ भएर तपाईँको सेल्फ स्टडीको बेसिसमा हुन्छ। हामीले क्लासेसहरू एमएस टिम्सबाट पनि दिन्छौँ होइन, भर्चुअल लर्निङहरू पनि गराउँछौँ, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्डिभिजुअल युजर र पासवर्ड दिएर PDF र भिडियोको एक्सेसहरू लिन सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूले रेजिस्टर गरेपछि र असाइनमेन्ट्सहरू हजुरले त्यही घरै बसेर लेखेर अनलाइन मार्फत बुझाउन सक्नुभयो। LMS भन्ने एउटा पोर्टल छ हाम्रो। र एक्जाम्सहरू चाहिँ नि एउटा धरानमा सेन्टर छ हाम्रो होइन, सरी इग्नुको नेपालमा 2टा सेन्टर छ, धरानमा र ICA को यहाँ चाहिँ केन्द्रीय विद्यालयमा छ। त्यो चाहिँ नर्मली जुन र डिसेम्बरमा हुन्छ। हजुरले एक्जाम्सको बेलामा चाहिँ अब डेटसिट हेरेर एक्जामको बेलामा चाहिँ सेन्टरमा आएर एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। अरू कुराहरूको लागि चाहिँ तपाईँको फिजिकल प्रेजेन्सहरू चाहिँदैन भनौँ न।
राम्रो भयो त म त हजुर सेन्टर दुईटा छ एक्जाम दिनलाई त जहाँ पनि आउन पाइहाल्यो हजुर धरानमा छ एउटा क्लासेसहरु इम्पोर्टेन्ट भयो क्लासेस एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो हजुर क्लास चाहिँ अब हामीले टिम्सबाट पनि दिन्छौँ हैन अनि फेस टु फेस पनि गराउँछौँ कुनै कुनै र तपाईको अब कुनै कुनै भर्चुअल लर्निङबाट पनि जान्छ अब बीसीएमै कोही हुनुहुन्छ यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ र प्लानिङ टु टेक एडमिसन बीसीएमसीमा पीजीडी को कोर्सेसमा पीजीडीसी त्यो कोर्समा चाहिँ तपाईको ल्याब क्लासेसहरु म्यान्डेटरी हुन्छ हैन भरतजी हजुरले काइन्डली अनम्युट गरिदिनुस् म्युट गरिदिनुस् न है हजुरको माइक भरत अनि प्र्याक्टिकल क्लासेसहरुको लागि मात्र यो म्यान्डेटरी तपाईहरुले अटेन्ड गर्नुपर्ने तर त्यो पनि एट द एन्ड अफ द सेसनमा चाहिँ सेन्टरमा आएर लिन सक्नुहुन्छ अरु क्लासेसहरु चाहिँ नि अल्दो हामीले प्रोभाइड गर्छौं बट दे आर नट म्यान्डेटरी अल्सो तर लिँदा तपाईहरुले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो नै हुन्छ किनभने यो काउन्सलिङ क्लासेसहरु हो जुन हाम्रो सरले अहिले भनिराख्नु भएको थियो मेन्टर टिचर र स्टुडेन्टदेखि मेन्टर र लर्नरमा चेन्ज भयो हैन अर्ग्यानिक लर्निङको कुरा लर्निङ टु लर्न भन्ने कुराहरु चाहिँ यो सेल्फ लर्निङ गर्ने कुराहरु हो सो त्यो कुराले चाहिँ हजुरले सेल्फ स्टडी गर्न पनि सक्नुहुन्छ त्यो बाहेक त्यस्तो केही इश्युजहरु भयो भने हामीले क्लासेसहरु पनि दिन्छौं त्यहाँबाट फुलफिल गर्न सक्नुभयो त्यो बाहेक पनि तपाईलाई ट्युटरको हेल्पहरु चाहियो भने चाहिँ हामीले कन्सर्न टिचरको फ्याकल्टिजहरुको चाहिँ नि कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरु पनि शेयर गरेर तपाईहरुलाई गाइडेन्स प्रोभाइड गर्न सक्छौं त्यसरी भन्नु न तपाईले आफ्नो क्वेरीजहरु फुलफिल गर्न सक्नुभयो यो हजुरले भनेको त्यो मेल त्यो त फर्म छ हजुरले मेल आइडी पनि पठाउनु भएको छ र मेल आइडी मैले पठाएको थिएँ मैले फेरि एकचोटि पठाउँदै छु हेर्नुस् ल यो icaedu.np हो एकाडेमिक भनेर छ CADEMIC academic@ica.edu.np ए पाए यो एकाडेमिक सेक्सनको भयो इमेल एड्रेस हजुरले अब अहिलेको सेसन रिलेटेड क्वेरीजहरु छ भने फरवर्ड गर्नुस् न अथवा त्यो बाहेक पनि त्यस्तो केही फर्दर तपाईलाई लाग्यो भने हजुरले शेयर गर्दा हुन्छ म कन्सर्न डिपार्टमेन्टमा फरवर्ड गरिदिन सक्छु यो academic@ica.edu.np मा हामीले क्वेरीजहरु पठायो भने हुन्छ सर हुन्छ पठाउँदा हुन्छ हामीसँग केही छ अरु फर्दर क्वेरीजहरु यो आजको यो चाहिँ हाम्रो के WhatsApp हाम्रो फोन नम्बर त भरे छैन क्या हो हाम्रो मेल आइडीमा आउला हैन हजुर आजको हजुरले यो अटेन्डेन्स सरले जुन हामीले अघि नै भरिसके मैले ठीक छ हजुरको त्यसमै रेकर्ड हुन्छ हामीले हेरेर फरवर्ड गर्छौं ओके थ्यांक यू सो मच सबैजनालाई once again thank you so much सरले भन्नुभयो जस्तै एजुकेसन मस्ट रन हैन हाम्रो स्लाइड्समा कुरा भयो जस्तो प्रेजेन्टेसनमा सरले कुरा गर्नुभयो र एन्ड हैज टु कीप मुभिङ डिस्पाइट अफ एनी च्यालेन्जेस सो यो भन्दै म हाम्रो विश्वजित सरलाई जो सर यहाँ हुनुहुन्छ अहिले सुनि पनि राख्नु भएको छ हामीलाई एकदम थोरै नै सरले एकचोटि क्लोजिङ रिमार्क्स के दिनुहुन्छ कि सर विश्वजित सर हु इज द म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ ICA Oh yeah, surely. Thank you, Padmaji. I hope I'm audible. First of all, हाम्रो प्रोफेसर चौधरी अहिले हुनुहुन्न आइरहेको मेबी ड्यू टु सम टेक्निकल ग्लिचेस उहाँलाई नै म पहिला धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँ he joined us for this webinar around from a different continent 5,000 miles away र त्यो साथमा हाम्रो जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरु आज जोइन गर्नु भएको छ हामीसँग उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु आज जोइन गरिदिनु भयो तपाईहरु हाम्रो यो कुराहरु सुनिदिनु भयो र तपाईहरु आफ्नो क्वेरीहरु पनि राखिदिनु भयो हैन र उहाँले त धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ हाम्रो टिचर सरले म त्यति डिटेल्समा जादिन यस अब ब्लेन्डेड लर्निङ इज द न्यू वे अफ लर्निङ टेक्नोलोजी बेस्ड लर्निङ नै अब द न्यू वे अफ लर्निङ हुँदैछ अथवा भइरहेछ त्यो त्यहीबाट नै हामीले पढ्ने अब ट्रेन्डहरु आइरहेको र हामी आइसीमा पनि वी वर अलरेडी इन्टु दिस टेक्नो बेस्ड लर्निङ प्रायर टु कोभिडले गर्दाखेरि हामीले अलिकति एक्सपर्टाइज पनि गरे र हामीले अहिले धेरै कुराहरू यो जति पनि सरले भन्नुभयो धेरै कुराहरू हामी एडप्ट पनि गरिसकेको छौँ जसले गर्दाखेरि हाम्रो लर्नर्सहरू विभिन्न फ्रम डिफरेन्ट एरियाज अफ नेपालबाट हामीसँग adopted technology based learning
massively, right? So हामीले truly blended learning सिस्टमहरु अहिले फलो गरिरहेको छु र यो नै हो अब हाम्रो सरले भन्नुभएको जस्तै चाहिँ अब हाम्रो roles have changed. Teachers have become mentors, students are becoming learners, so roles have changed. त्यो रोललाई नै मध्यनजर राखेर हामीले आफ्नो डेलिभरी मेकानिजम हाम्रो एकाडेमिक डेलिभरी मेकानिजम पनि हामी त्यसरी नै एडप्ट गरेको छौँ इभन युनिभर्सिटीले पनि त्यसरी एडप्ट गरिरहेको छ त्यहाँ प्लेन्टी अफ रिसोर्सेस युनिभर्सिटीको एभाइलेबल छ इग्नुको रिसोर्सेसहरू तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ प्री रेकर्डेड लेक्चर्स ई बुक्सदेखि लिएर सबै कुरा राखिदिएको छ इभन आइसिएले पनि हाम्रो प्री रेकर्डेड लेक्चर्सहरू अब अथवा हाम्रो एकाडेमिक काउन्सिलिङ क्लासेसहरूको रेकर्ड्सहरू पनि पाउनुहुन्छ र हाम्रो आफ्नो एलएमएसको माध्यमबाट हामी धेरै रिसोर्सहरू दिइरहेको छ हाम्रो लर्नर्सलाई धेरै अर्गनाइज वेमा त्यो रिसोर्सहरू हामी प्रोभाइड गरिरहेको छौँ र त्यसलाई एनहान्स पनि गरिरहेको छौँ इन कोर्स अफ टाइम है सो यति भन्दै म अब हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई वन्स अगेन थ्याङ्क यू भन्दै हाम्रो पद्मा म्याम हाम्रो आनन्द सर जो कि हाम्रो टेक्निकल उयो हेरिरहनु भएको छ लगायत सबै मेम्बर्सहरू जतिजना इन्भल्भ हुनुभयो यसमा त्यो लगायत सबैलाई धन्यवाद दिएर म यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच Thank you so much, sir. Recording stopped. Okay. हजुरहरूलाई त्यस्तो केही क्वेरिजहरू छ भने हाम्रो यो मिटिङ लिभ गरेर कन्सर्न डिपार्टमेन्टमा हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ हैन र फर्दर